I am extremely happy to see that ISRO is now embarking on one of the most complex missions that is undertaken since its inception, that of launching the Chandrayaan 2, which has got an ambitious mission goal, that of putting a craft around the moon as an orbiter and then take a part of it and land it on the surface of the moon, the lander, and ultimately deploy out of this another craft that would do a little bit of roving around the vicinity of the landing and search for itself certain features of the moon, the geological and other aspects of the lunar surface. But at the immediate concern is to make sure that we have a very successful mission of a launch of the Chandrayaan 2, its operations in the context of leading into a lander on the moon and ultimately getting some feel of the scientific basis of certain aspects of the lunar evolution and its present status by the instruments that are being flown, both the orbiter, lander as well as on the rover. So I wish Dr. Shivan and his team the very best in this mission, and I am sure the country will certainly be proud of what ISRO is doing today in this context. Thank you. This is not only the question of the social issues, yes. It's a national issue which encompasses and touches upon the lives of people, yes, in the immediate future as well as for the coming decades. And you have to address this with respect to the diversity and the complexity that India represents. So to me, it was really one of the most challenging assignments that this government gave us as a team. And we have tried to do our best, that's all we can say. But it was satisfying as a great experience in retrospect if you look at it, because the responses that we have been getting even in the short period when it was put in the public domain, especially from those who have talked to the totality of this particular document, is very encouraging. And we feel that we are on the right track in making those recommendations to the government. देश के लगभग 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालय, 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज, 15 लाख से भी अधिक स्कूल, 1 करोड़ 9 लाख से भी अधिक अध्यापक और कुल अमेरिका की जितनी आबादी नहीं है उससे भी अधिक 33 करोड़ से भी अधिक छात्र और छात्राओं को आज के इस ऐतिहासिक दिन पर बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं। मुझे भरोसा है कि जो ये हमारी शिक्षा नीति है, ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, प्रौद्योगिकी से युक्त, संस्कार क्षम, मूल्य परक, हर क्षेत्र में हर परिस्थिति का मुकाबला करने वाली, पूरी दुनिया के लिए भारत में ज्ञान की महाशक्ति के रूप में उभर करके आएगी। आज हम सभी एक ऐसे क्षण का हिस्सा बन रहे हैं जो हमारे देश के भविष्य निर्माण की नींव डाल रहा है। एक ऐसा क्षण है जिसमें नए युग के निर्माण के बीज पड़े हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देने वाली है। पिछले 3 दशकों में दुनिया का हर क्षेत्र बदल गया, हर व्यवस्था बदल गई। इन 3 दशकों में हमारे जीवन का शायद ही कोई पक्ष हो जो पहले जैसा ही रहा हो, लेकिन वो मार्ग जिस पर चलते हुए
समाज भविष्य की तरफ बढ़ता है, हमारी शिक्षा व्यवस्था वो अब भी पुराने ढर्रे पर ही चल रही थी। पुरानी शिक्षा व्यवस्था को बदलना उतना ही आवश्यक था जितना किसी खराब हुए ब्लैक बोर्ड को बदलना आवश्यक होता है।